Yes, ma'am. Okay, so let's begin with the topic. Yesterday, we already started with the pandas library, and we had seen there are many things into the pandas library. Like we can implement a pandas library for the series and the data frames. Then we created a series, we created a data frames, and we seen many things related to the series and the data frames. Um, on top of it, we also talked about the slicing. Yeah, the last topic we discussed was the slicing. Am I right? Just give me 1 second. I get my charger. Just give me 1 minute. Yeah, slicing was discussed yesterday. See, if you are not going to ask me the things, or if you are not going to acknowledge the things, how I can proceed the things actually. Slicing समझ में आया था आपको? I'm just sharing quickly the session file which we had seen. Yeah, slicing of the series we did. Everybody had tried this. I had given this, I think, file at the end of the session. Everybody received or not? Kindly check. This code, have you executed? Yeah. Suppose I want to modify the data frame. Okay, I want to rename the column or row labels of the data frames. Okay. So there is a function we call as a if I just want to rename the column or a row in the data frames, row labels, I meant to say, in the data frames. So I have in the Panda, I have a data frame function called data frame dot rename. So basically, with the help of this method, okay, with the help of this method, I can rename column or rows labels. Okay. Now it is very simple how we can have it this. Just 1 second. I'm just quickly starting the online editor. Yeah. I hope my screen is visible. No, ma'am. It's not. No, ma'am. It's not visible. Yeah. Now. Yes, ma'am. So we already talk about like how to import pandas, and I'll be importing as a PD. It's a local variable I just created for the panda library. Okay, and after that, I'm displaying it. Okay, now I'm just having this import panda as a PD, and now I'm just using, I'm just creating a data frame. Okay, data frame is equals to the PD dot, I'm having a data frame method, and I'll be creating a data frame by just passing the value. Here I'm creating a data frame by just having different kind of value here. Okay, so like let's say this, and 1, 2, 3.
B, and say, even you can have even odd, whichever you want, you can have it. Okay. I just taken some values here, and this is being created. Once it is being created, if I just want to display the original one, okay, I just want to display this frame, okay, uh, this DF frame actually. So how I'm going to display it? I'll just have a print. In the bracket, I'll be just having a original DF, okay, and I'll be just printing it with the help of again DF keyword. That's it. Okay. And let's say I want to rename. Okay. So I just want to rename this DF labels. Okay. Okay. So I just want this labels like A with say, uh, let's say, I'll just taking this. Okay. 2, 4, and say 6. Okay. And this 1, 3, 5. Okay. I want this A with the even number, even numbers. Okay. This label I want. Okay. How I'm going to do this? Okay. So it's very simple. I will be creating a DF with DF is already existing. I'll be using a rename function. Okay. What thing I'm going to change? I'll be going to change columns. That is a columns is equals to in the curly bracket. What is A? It's already existing. I want to make it in the even number. So this is a rename. I'm just making it. Okay. Once it is being done, I will be printing the renamed, or we can say the modified one, DF. Okay. How I'm going to print? Simple print function and DF. Is it clear? Now I'm executing this. You will observe, see earlier it is A and B, and in the modified DF, I'm getting even number with 246. Same you can change rename with the B with the odd number. Karo. Quickly karo ye. See, this is very frequent thing we do when we deal with the data set in the Python for the pandas. Okay, so if you want to change some labels, you want to add few labels to your rows, your columns. So that time you will be using the same approach which I just demonstrated. Okay, so do it quickly. Then the further I want to remove few things, remove some rows from the data frames. Okay. So I have another function called drop. So we will demonstrate the drop as well. Okay. But before to that, modify this. Is it clear? The program is clear to everyone? Sachin, Sweta, Shri. Yes, ma'am. Yeah. I'm just executing it. Yeah. And Natik, do it quickly. Yeah, done.
Then the another thing we are having, that is removing rows from data frames. So as we know that data frames are two-dimensional data structures, right? We used to arrange the data in the tabular format, which consisting of rows and columns. Yeah. So data frames are generally used for a data analysis and the manipulation. So like try to understand whatever we are discussing right now, or like a slicing we did in the yesterday session, and whatever we did in the yesterday session on the pandas library by using certain data set, a simple data set, ये सारी चीजें आपको एक्चुअल डेटा सेट पे करना पड़ सकती है इफ यू आर जस्ट गोइंग विद द पैंडा लाइब्रेरीज. ओके, सो ये सारे ऑपरेशंस आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करो. ओके, व्हाट आई मीन टू से हियर इज, जो भी ऑपरेशंस मैं पैंडास के बता रही हूँ ना, वो प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट करके देखो. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी एट राइट नाउ इन दिस लाइव सेशन. ओके, सो नाउ सपोज लाइक आई वांट टू रिमूव समथिंग. ओके, I want to handle a large data set and I want during that data processing or some analysis, I feel that there is few columns which are not useful. ओके, जैसे हमने असेंचर के डेटा सेट में देखा था कि वहां पे डिविडेंड का कॉलम था जिससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था वो कॉलम को रख के. तो हमने एक्सेल में और इवन इन द पावर क्वेरी हमने रिमूव कर दिया था, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि वो कॉलम अननेसेसरी हम कैरी करें हमारे एनालिसिस प्रोसेस में. सो वी जस्ट रिमूव इट. सिमिलरली ऐसे आपको यहाँ पे भी हो सकता है, लाइक विद द सर्टन डेटा सेट आपको कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए है. इफ यू डोंट वांट सर्टन कॉलम्स, not columns, certain records, I mean to say certain records, so you will be removing unwanted rows of containing irrelevant data या missing data जिसमें है, या कुछ specific values है जो आपको नहीं उसको you don't want those values, so you can straight away remove those content. Okay, unwanted rows. And how you are going to remove that? So we are having drop method. Okay, using this method, okay, we can remove the rows which are unwanted or some missing values or which are not needed for data processing. Is it clear now? Now how we are going to use basically drop method. Similarly, जैसे हमने like we had seen for the rename, the similar way we can have it for the drop method. So on the same way, if we just look at into the same data frame, okay, I am having this data frame. I'm just increasing few numbers. So I may have this, I may have 10 here, and 5, 7, 9, and 11. So I'm just creating this. What happened with this? 1 second. Yes, ma'am. I have executed, but this nothing has come. No. It is mismatch. It has to be same, na? Okay, ma'am. That's why. Okay, so this is a rename I did. Okay. Similarly, I will be dropping few values. Okay, so I just want to drop few rows or one row, I mean to say. Okay, I just want to drop with the certain index you need to pass here. So say index maybe 4. Okay, I just want to remove the row which is having index is equals to 4. So if you see in your outcome, so what is index 4 is, this is the index 4 ideally. Okay, and I want to remove this. So I'm going to use drop. So df drop, in the bracket, I will be passing that index, and then I will be displaying, again I am displaying the updated one, updated df. Okay, so how I'm going to display it? With the help of
Today I'm unnecessarily getting this basically things. 1 second. Huh? Oh no, why I did this? Oh, ho, ho, ho. I just want to remove this and actually, which is unnecessary coming. But it is still showing me. Anyway. पूरा फिर से करना पड़ेगा. Anyway, import pandas as PD. Then we will create data frame. Okay, so describing data frame. I'm just creating a data frame here. So df is equals to PD dot data frame. I'll be creating a data frame, say A, which is representing some values 1, 2, 3, 4, 5. And then I'll be having B. Again, I'll be having some values 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So make sure that whatever be the values you are taking, it has to be the same values. Okay. Count. I mean to say the count. Okay. And then if I just want to print this DF, I'll just print like this. Okay. This will show me the original DF. If suppose I'm just dropping some values, okay, using a drop method, I just want to remove something, okay. So I'm just removing few things. So I'll be just creating a one variable result df dot drop method, and I'll be passing values to it, okay. So I'll just want third index element. I want to remove it from the df, and then after again I want to print it, okay. So print, okay, after drop method. Okay. So what you will get it? You will get it /n. I'm just taking /n, and then it will be printing your new revised updated DF. No, it will not DF. It will be the result. Actually, now result will show you the data frame, right? Because in the result variable, we had stored that. Okay. And then that's it. I'm just executing it. So what I get it here, if you see, this is the original one I received. Okay, so जो मैंने बनाया है data frame वो मुझे मिला है. अब उसके बाद जब मैंने ड्रॉप किया है तो यहां से जो भी इंडेक्स था, जो थर्ड इंडेक्स था, ओके, थर्ड इंडेक्स पे क्या था 4 and 5. नाउ इन दिस रिमूव्ड 1, 4 और 5 रिमूव हो चुका है. पूरा का पूरा थर्ड इंडेक्स रिमूव हो चुका है. डायरेक्टली मुझे 4 इंडेक्स पे 5 और 6 मिल रहा है. इज दिस क्लियर? Is it clear or not clear? Yes, ma'am. Okay. Now, you can do the similarly slicing as well, the way we did earlier. There can be arithmetical operations we can perform on the data frame. Okay. So in the pandas data frame, as we know that it is a two-dimensional data structure, which is used to store your tabular format of data. So like in the similar like your SQL or your Excel, we can apply certain mathematical operations on the data frames. Okay. And these operations of data structures are performed without even needing the loop. We directly apply it as a arithmetical operations like plus, minus kind of thing, like addition, subtraction, multiplication, division. So these basic fundamental arithmetical operations we can easily perform on the data frames. Okay. So let's talk about this data frames, how we can perform this basically arithmetical operations on the data frames. Okay, अगर मुझे
कुछ वैल्यूज को आई वांट टू मेक इट सम चेंजेस, मतलब सारे वैल्यूज को चेंज करना है बाय जस्ट एडिंग टू और बाय सब्ट्रैक्टिंग टू और बाय मल्टीप्लाइंग टू. So I can easily do it with the help of these arithmetical operations on the data frames. Okay. जो numpy पे नहीं हो सकते हैं, although numpy is basically for the scalar value, right? न्यूमरिक वैल्यू है, लेकिन numpy पे ऐसे operations possible नहीं है, whereas in the data frames it is possible. Okay. Now we are going to create, already we created basically data frame, okay? And then we already having few things which is being done like a drop and everything. अब मैं सिर्फ drop हटा रही हूँ क्योंकि I don't want to drop anything. I just want as it is this basically data frame which is being created, okay? Now I want to perform few operations, okay? So arithmetic operations I want to perform. Operations on the data frame. So let's talk about that, how we can perform it. It's very simple. We can have it. We directly perform it into the print method, or we can perform it with the help of certain variables. मतलब आप result 1 ले लो, वहां पे परफॉर्म करो, रिजल्ट प्रिंट करवा दो. एक ये तरीका होगा, उसमें आपको 2 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, लाइक इन द प्रिंट मेथड इटसेल्फ, in the code you can, in the print function itself you can basically remove the things, or you can multiply the things, or you can add the things like this. Okay. ये जो तरीका होता है इसको inline कहते हैं. We called it a inline way of writing the code. Okay. So I'll be having a df, okay, and I'll adding a 2 here. Same we can have it for subtraction. Okay. And I'll be having n comma df, say +1. Oh, sorry, -1. Okay. After that, I will use multiplication. Yeah, and what you are going to do here, you can also have, see, there is one multiplication, then you can have a division. After division, you can also have a exponential. अरिथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? एक होता है ये बेसिक जो हम अभी कर रहे हैं, प्लस टॉप ऑफ इट और कौन से होते हैं? एक्सपोनेंशियल इज ऑल्सो द अरिथमेटिकल ऑपरेशन, then modulus is also arithmetical operation. Yeah, so these two also you can do it here. And then you can have a print. Exponential कैसे करेंगे हम? Can anybody tell me how we can do the exponential? Exponential कैसे करते हैं? We always refer exponential with the 2 asterisks. That's it. Now we are going to execute this. So there is a big result set we received here. So this is the original one. After the addition, I got this. Okay, look at this. The values are being added. मतलब पहला जो 1 था वो 3 हो गया है. Okay. Then it become 4 here. Same like that. Okay. Then subtraction, again it get removed. Then multiplication. And after that we got a division. If you see here, the division is into the decimal. So automatically decimal value can be easily held by my data frame, and then exponential. Is it clear? Is it clear or not clear? Yes, ma'am. Okay. I'm giving you next 5 minutes to work on this code, okay? I'm just taking a screenshot.
pasting here for the arithmetical operations, how we can have it. And this is a result set. I just printing itself here, the output for further your references. But ideally, I'm giving you next 5 minutes to work on this code quickly. और किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछो, क्योंकि आगे मैं आपको एक स्मॉल सा आई विल गिव यू स्मॉल असाइनमेंट. ओके. Now this is for the one data frame we did, right? एक ही data frame और उसके ऊपर हमने arithmetical operations किए. If suppose there are two data frames and I want to do it arithmetical operation on two data frames, how I can perform those? Let's say this is my data frame 1. Okay, मैंने उसको एक temporary नाम दे दिया df1. I just changing the df1 individually, क्योंकि नहीं तो मुझे वो syntax error देगा. So I'm just making the changes here. Okay. And now I'm creating another basically data frame, that is a df2. Okay. And again, I will be creating using a Panda object data frame method. And I'll be having again say A. And you will be having few values here. Okay. So it can be I'm just taking 10 to show you like how the things happen. Okay. So five values I had taken here. Okay. After that, the comma and then B. And then I'll be having, again, I'll be having 100. Okay. And I am also having index parameter. See, we are having many basically parameters. So I'm just creating here the index separately. Okay. So how many basically values I will be having here? So the 5 values. So I'll be just taking a separate index like which is starting explicitly by 1. Okay. By default वो 0 से शुरू होता है, लेकिन explicitly ये 1 से start हो रहा है. Okay. So this is the index I am explicitly creating for data frame. Okay. D2. Okay. Now, how I'm going to perform addition? See, ये तो मैंने simple arithmetical operation on df पे किया. If I just want to add df1 plus df2, possible है क्या? Let me first understand कि आपका मतलब understanding हुआ है क्या जो मैं कर रही हूँ उस पे. Yes, Naitik, Shri, is it possible or not possible? Yeah, Shri, Naitik, Sachin, Sweta. Ma'am, still I have not executed it, couldn't say. Yes, ma'am, we can add.
We can add, but like how we like how it is possible? Like if we said like it is possible, like how you are very sure, like how you are very sure that it is possible? मैम कॉलम ए और कॉलम बी को ऐड तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। हाँ, पर कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे, लाइक हाउ इट वर्क्स, दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। मतलब होगा, दिस इज पॉसिबल, पर ये लॉजिकली कैसे होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। By adding DF1 and 2, ma'am? मैम या मैम ये ए और कॉलम बी में दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। हम्म। जैसे 5 इसमें है और 5 बी में है, सो इसीलिए ये पॉसिबल है शायद। अगर एलिमेंट्स में डिफरेंस होता, जैसे ए में 6 और 7 होते और हम्म। बी में अलग होते, कुछ 4 5 ही होते, तो हम्म। फिर मे बी पॉसिबल नहीं होता। बट यहाँ पे दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, तो मे बी इस वजह से। अगर सेम नहीं भी होगा ना श्वेता, अब ट्राई करके देखना, यहाँ पे सेम लिया है, लेकिन इफ इट इज नॉट इवन सेम, तो यस भी मैम। ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे नंबर में भी सेम नहीं है, जैसे मान लो डिवीजन है, या वहां हम्म पे उस लोकेशन पे नंबर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है किसी DF1 में या DF2 में, तो वहां हम्म। पे आता है NaN करके वैल्यू, जिसको बोलते हैं नॉट अ नंबर। ओके, ओके। और फिर हम नॉट अ नंबर सर्च करके वी कैन रिमूव दैट नॉट अ नंबर थिंग्स इन द डेटा फ्रेम बाय यूजिंग अ ड्रॉप मेथड। ओके, मतलब जैसे मैंने आपको बोला ना, अनवांटेड या मिसिंग वैल्यूज है, तो वो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे हमारे डेटा फ्रेम्स में, एंड देन वी कैन ड्रॉप दोज वैल्यूज, दोज बेसिकली वैल्यूज विच इज नॉट अ नंबर, मतलब ब्लैंक है वो। तो मैम ये जो एक्स्ट्राज में रहेंगे, तो उसमें NaN लिखा हुआ आएगा हमारे आता है, पास? ऑटोमेटिकली आता है वो। ओके। अब करके देखना। I'll just show you right now just how to add these two data frames first, and then I will show you that as well. Okay. वही, बिकॉज ऑफ दैट फीचर्स ओनली, जो pandas लाइब्रेरी है, दे आर मोर इफेक्टिव देन योर numpy लाइब्रेरीज। ओके, numpy में आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमरिक वैल्यू पे काम करते हो, whereas in the pandas you work on the numeric as well as the basically categorical values, मतलब जो नॉन न्यूमरिक वैल्यूज है उस पे भी काम होता है। प्लस इसमें इंडेक्स रहता है जो आप एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सकते हो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल, मतलब एज गुड एज ये आपका एक्सेल शीट जैसा आप बना सकते हो यूजिंग pandas। समझ में आ रहा है आपको? एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम। सो इसलिए जो अगर लाइक सी दिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू नॉर्मली होते हैं ऐसे, कि आप क्या प्रेफर करोगे ओवर द pandas और numpy, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप numpy पे काम करोगे, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप pandas पे काम करोगे। तो आपको दोनों चीजें एक तो पता होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग, एंड द सेकेंड थिंग, लाइक जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब ये जो चीजें हम कर रहे हैं, लाइक इन द डेटा फ्रेम्स वी आर डूइंग दैट अरिथमेटिकल ऑपरेशन विच वाज नॉट देयर इन द numpy। ओके, फिर numpy में हम अरे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, उसके लिए हमको लूप यूज करना पड़ता है, यूजिंग फॉर लूप we have to traverse and we have to add that array element individually and then we can print it। okay, because numpy जो है वो हम ओरिएंट ही, मतलब उसको जो
ओरिएंटेशन है या उसका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज इटसेल्फ इन द एरेज, राइट? बट वेयर इज इनटू द pandas लाइब्रेरी, इनका रिप्रेजेंटेशन डेटा फ्रेम्स में है, प्लस इनके पास खुद का इंडेक्स है, एक्सप्लिसिटली इंडेक्स है। आप उन इंडेक्स को लेके भी अलग अलग चीजें यू कैन हैव इट, यू कैन चेंज द रोज एंड कॉलम लेबल्स। तो काफी चीजें अगर आप एक ब्रॉड इसमें देखें फॉर अ डेटा सेट, you realize that if it is a big size data set, you can like resemble these things with the Excel data sheet or worksheet, I mean to say, or it can be same like your SQL table, okay? और फिर आप बाकी के ऑपरेशंस करने के लिए आपको इजीली समझ में आएगा कि क्या करना है आगे। Let's say we will work on this, okay? Only these two values we are going to work, okay? अब ये जो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस है ये मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट कमेंटिंग इट, ओके? और आई एम जस्ट रिमूविंग इट। और ठीक है, मैं इसको रहने देती हूँ, बाद में देखती हूँ। पहले लेट मी फर्स्ट वर्क ऑन द लाइन नंबर 10 and 11. So I'm just getting some raise back call, name DF is not defined. Oh, okay. DF1. So this is the error, I got it. Okay, now again I'm running this code. This is the syntax error I got actually. So if you see here, what I got. आउटपुट देखो अभी, मुझे ये दिखाना था आपको, नॉट अ नंबर। सी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या हुआ यहाँ पे, जो 0th लोकेशन पे है तो दैट इज बीइंग ट्रीटेड एज अ नॉट अ नंबर। व्हाई इट कमिंग एज अ नॉट अ नंबर, उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है सोच के। सब्ट्रैक्शन में ऑब्वियसली इट विल, ए जो डेटा सेट है, डेटा फ्रेम है, उसमें से आप 1 - 10 करोगे आपको वैल्यूज इस तरीके से ही मिलेंगी। बट हाउ इट इज कमिंग एज अ नॉट अ नंबर, दिस इज माई क्वेश्चन। वहां पे एक्चुअली वैल्यू मिसिंग है, ओके? इसलिए ये जो आपने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे एड्रेसेस तो ले लिए हैं, तो 0th पोजीशन है क्या, इंडेक्स है क्या यहाँ पे, नहीं है ना? तो वहां पे नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आप समझे अभी आपको? क्योंकि यहां से मैंने एक्सप्लिसिटली उसका ऑर्डर 1 से चालू किया है। अगर ये मैं इंडेक्स पैरामीटर हटा देती हूँ, ओके, लेट्स से दिस पैरामीटर आई एम नॉट गिविंग, तो क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट विद द जीरो, okay, and then it will start with the zero, then you will not get this not a number basically values here, क्योंकि जीरो पे कुछ नंबर है ही नहीं। समझा आपको? यस श्वेता श्री। Yes, ma'am, definitely. यस मैम। ओके, आपको ये करके देखना पड़ेगा। सी वंस यू डू दिस बेसिकली, जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये नॉट अ नंबर क्यों आया, व्हाई इट इज कमिंग, बिकॉज यहाँ पे मैंने इंडेक्स खुद से लिया है, एक्सप्लिसिटली आई एडेड, ओके? if I don't add, so by default it will start with the zero, and by default when it start with the zero, it will give you error values जो आपको 1 पे दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, वो सब ऊपर लिफ्ट हो जाएंगी, ओके? बिकॉज इट विल स्टार्ट विद द 0th इंडेक्स, बट यहाँ पे मैंने इंडेक्स चेंज कर दिया है, इसलिए वो वहां पे नॉट अ नंबर वैल्यू आ रहा है। Okay, now there are few functions, okay? There are few inbuilt functions we are having in the pandas library that I am going to discuss. But before to that, I'm just copying this code. Just give me 1 second.
Yeah, I'm just giving this code. In your notes file. I hope this will actually work. You just refer the code even, you will understand. Okay. Now there are few inbuilt functions. Okay, there are few inbuilt functions, arithmetical functions in the pandas. Okay. Okay. So what are those arithmetic functions? So like you can have add function. Okay. जब आप add करोगे ना तो यहाँ पे आपको एक्सेस मेंशन करना पड़ेगा. मतलब आप कॉलम पे ऐड कर रहे हो कि रोज पे ऐड कर रहे हो. सो दैट इज द एक्सेस. आई होप यू रिमेम्बर द सिंटेक्स. ओके. तो जो हमने एक्सेस के सिंटेक्स देखे थे ना, मेजर माइनर एक्सेस, सो दैट वी विल बी यूजिंग हियर. ओके. सो ऐड फंक्शन and here we will be fixing, we will be passing certain values with the access value. Okay, so access, फिर यहाँ पे लेवल और fill the value, मतलब किससे ऐड करना है आपको, so that you can have it like this. Okay, then you can have a sub. Similarly ये एक फंक्शन है, इसमें भी सेम जैसे above सिंटेक्स है वैसा ही यहाँ पे भी जाएगा. You also having multiplication. The same syntax will be passed here. And for the division, the same syntax you will be writing here. Okay. Top of it, arithmetical operations की बात हो रही है. So we also have power function. Okay. In the power function also the same, basically, what I say, the parameters we will be passing. Okay. So these are the same parameters we will be passed in your power function as well. Okay. Then, yeah. The similar fashion, we can have a reverse add, reverse subtraction. So reverse element wise addition. Okay, so just opposite, like जो fifth index पे है, that is being added first, then fourth, then third. Like reverse order में भी addition हो सकता है with the help of R add, R sub, R multiplication, R div. Okay, so this is all the basic, or we can say these are the arithmetical functions, inbuilt functions we are having in your pandas libraries. Okay, so this is all about the pandas. Ma'am, is there a big bracket close after value? Yeah, it is. Okay. It has to be. Actually, ये इसके पहले रहेगा. It will not after that. It will be before that. Yes, ma'am. I said the same thing. Okay, so this is all about the pandas, and I hope like you understood this library. Please practice all the code, all the functions, all the concepts of Python which we discussed, क्योंकि ये programming language है. हो सकता है if you are not from the background of programming, you might feel little basically complex at this moment. पर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ग्रेजुअली, आप धीरे धीरे, जैसे कोड जो आपको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए ये वर्ड फाइल में पेस्ट करके जो मैंने एग्जीक्यूट करे हैं सेशंस में, तो आप वो का वो फिर से करके खुद से देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाउ द थिंग्स हैपेंस. ओके, इन द पाइथन. एंड पाइथन इज वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, लाइक विद इन अ, अगर आप खुद से भी एक 4-5 दिन उसके ऊपर
small assignments थोड़ा करके explore करके if you start working on it you will definitely understand कि how Python works. Yeah. Before to that, I just want to discuss about project. How many of you started working on the projects? I was starting. Ma'am, I have submitted the project today. It is based on Python only pandas. Like I knew pandas from before, so like I also explored a little bit more than what you had taught, and I've made my project on that. Okay, perfectly fine. Anyone else who is doing project in apart from Python, like earlier technologies like SQL, Excel, or maybe Power BI? Ma'am, I'm Yes, on ma'am. Excel and Power BI. Still SQL is remaining. Okay. Ma'am, I'm working on SQL with some pizza sales data. Okay. Yes, ma'am. So you got that data, you created your own data. No, ma'am, I got that data from GitHub. Okay. Yes, And you downloaded and you you created yes, table ma'am. structure and yes, Yes, okay. ma'am. It was a CSV file, and that's how I'm working it with SQL. तो आपने CSV से SQL पे कन्वर्ट कैसे किया? स्क्रिप्ट लिखा क्या आपने? No, ma'am. वो actually I go through some YouTube videos, और फिर मेरे को पता चला, और फिर मैंने वैसे वैसे ट्राई किया तो वो हो गया था. ओके ठीक है, Yes. आपको कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें, मतलब ये पूछ रही हूँ मैं. No, मैम, अभी तो नहीं है, बट होगी तो फिर I'll definitely get to you. Yes, definitely. I Yes, hope everybody is having my WhatsApp number. Like we are in the one group. yes, So, like, agar at any moment, if you want any kind of basically clarity on the project or any mock kind of interviews, things on the projects as well as the complete topic, so we can have one further conversation, or else you can have it one-to-one WhatsApp message. I will definitely reply whenever I get time. Okay? excuse me, ma'am. Yeah. I'd like to ask, ma'am, if we get the data from the GitHub, so could we modify according कर to us? सकते हो ना, आप आपके हिसाब से मॉडिफाई कर लो, कस्टम कर लो आपके हिसाब से डेटा. आप उसमें कुछ और एडिशनल फील्ड्स ऐड कर सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये इतना नहीं है, मुझे और भी उसमें चाहिए है कुछ एडिशनल चीजें. सो यू कैन ऐड दोज थिंग्स इन योर डेटा. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो गिटहब से लिया है या केगल से लिया है डाउनलोड करके वो ही डेटा सेट पे ही काम करना है. आप उस डेटा सेट को रेफर भी कर सकते हो एंड यू कैन जनरेट योर ओन डेटा सेट. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Because for writing SQL query, literally, I want to generate my own. Yeah, that would be better in fact, because when you generate, once you create your own data, so obviously you know how, what kind of parameters you consider, what kind of data type you had taken, कैसा वो data रहेगा, वो सारी चीजें आपको पता रहती है. अगर आप GitHub से लेते हो तो पहले आपको उस डेटा को समझना पड़ता है, Yes, राइट? ma'am. Yes, ma'am. तो Same thing. Just because it's हाँ. writing SQL query, so I just wanted to make my own data. या दैट इज ऑलवेज बेटर. जैसे हमने HR डेटा क्रिएट किया था, आप वैसे कुछ भी डेटा सेट क्रिएट कर सकते हो. यू कैन हैव अ कस्टमर डेटा, यू कैन हैव योर परचेज और वेंडर के साथ का एक आधा कोई डेटा आप क्रिएट कर सकते हो. यू कैन हैव इट. और उसको क्रिएट करते टाइम भले ही आप थोड़ा बहुत केगल या इसका रेफर करके जो वैल्यूज है आपने कॉपी पेस्ट किया, ओके दैट इज ऑल ओके, क्योंकि वैसे ही डेटा सेट क्रिएट किया जाएगा ना जब आप खुद से कर रहे हो तो. क्योंकि आपके कोई एप्लीकेशंस नहीं रन हो रहे ना जिससे डेटा क्रिएट हो रहा है या आपको रन टाइम कुछ वैल्यूज मिल पा रही है, ऐसा तो हो नहीं रहा है. सो Yes, यू ma'am. कैन डू इट दिस वे फॉर स्मॉल दैट प्रोजेक्ट विच यू आर वर्किंग. Yes, ओके. ma'am. और आप बोल भी सकते हो, लेकिन जैसे आपका मतलब अगर जैसे दिस प्रोजेक्ट्स मे बी इवैल्यूएटेड एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स और मे बी यू आर गोइंग फॉर सम इंटरव्यूज, तो आप बोल सकते हो कि सी दिस इज आई डन, दिस इज द अप्रोच आई हैड अप्लाइड. आपको बेसिक फंडामेंटल जो स्टेप्स है ना डेटा एनालिटिक्स की वो बहुत थॉरोली एक्सप्लेन करते आना चाहिए आपके प्रोजेक्ट पे. तो Yes, जो ma'am. भी आप कर रहे हो, वेदर यू आर डाउनलोडिंग फ्रॉम केगल, वेदर यू आर गोइंग विद द गिटहब, या आप कोई रेडीमेड प्रोजेक्ट भी उठा रहे हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट दैट प्रोजेक्ट इज डूइंग. ओके. Yes, ma'am. Definitely. ओके. तो वहां पे कहीं आप मिस मत करना कुछ भी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए. इफ यू कम विथ एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी. ओके. Yes, ma'am. Definitely. Thank you very much. या.
I hope this was already given to everyone in one of the session. I did this, I think 7th Jan or some like in the month of Jan only we did this. Yes, ma'am. 7 So Jan. yeah, so this is a kind of basically projects you can have it. ये कोई project जरूरी नहीं है कि आपको Power BI में करना है. You can have it into the Excel or you can create your data set. मतलब आपको अगर customer का data set मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, मान लो GitHub से मिल रहा है और वो है आपके SQL में, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसको फिर से एक्सेल में कन्वर्ट करना है या आप उसके लिए आपको कुछ अलग प्रोसेस करना पड़ेगा. लेट इट बी इन द सीक्वल, हैव द एनालिसिस इन द सीक्वल. जो भी रिजल्ट सेट जनरेट होता है ना सीक्वल में, जैसे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस ऐसे करके जैसे रिजल्ट सेट मिलता है ना हमको नीचे एज आउटपुट, आप उस आउटपुट को कॉपी करते चलो इन योर डेटा सेट्स, ओके, इन योर वर्कशीट्स, or you can export that complete database into Power BI and then you can have this kind of dashboards. क्योंकि हमने दोनों में देखा है, like Excel में भी हमने Power Query में how to source the data we had seen, and in the Power BI we had done many times that sourcing of the data, right? So दोनों में आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको Excel sheet में ही चाहिए है data. You can have it into SQL, you can have it into the Excel or a CSV file and you can work on it. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. I hope you understood a complete topic of data analytics, and I had shown you many things practically so that you get understanding how to use all these tools and technologies practically. Okay, I'm hoping that you did the practice, the assignments which I had given you. Okay, still if you come with any kind of doubt regarding your project or कोई और भी topic होगा जो आपको ऐसे लग रहा है कि ये मुझे पूछना चाहिए, so you can discuss at any time. Okay. Fine, everyone. I hope you will be completing all the project properly. Okay. Thank you All very the much. best. Ma'am, excuse me. Yeah. Yes. Ma'am, I would like to ask uh, whether we will have this dashboard for next 15 days, because we could when we will Go do through the recordings. उसके लिए आपको शायद साहिल sir will help you, because see, Okay. I'm not a right person to basically assure you कि ये कितने दिन तक available रहेगा recordings and other things, क्योंकि वो ही आपको अच्छे से बता पाएंगे. So you can directly connect with the साहिल sir or any Stu-Valley coordinator जो भी आपसे contact करते होंगे उनसे. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. Okay. Bye, everyone. All the Bye, best. ma'am. Ma'am, please share notes. Yes. Today's notes I'm going to share on the WhatsApp. Is it okay to you? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Bye. Thank you, ma'am. Yeah. Bye, Shweta, Sachin, Balaji. Bye. All the best. You too, Shri.